Good morning, students. Hope you understand the concept of flow process chart and how we select the process. Now, we are going to cover next topic, that is a material handling. What exactly material handling is? Basically, material handling involves the movement of your material from one place to another place for the purpose of processing. They are moved either manually or mechanically with the help of different types of material handling equipment like lift or moving, dropping, positioning, holding, releasing, stacking. Everything we can do with this. Move a single item or a lot depend on size, weight of material, capacity of the material handling equipment, types of processing also. The material handling include all types of movement of vertical, whether it is horizontal or all type of material like fluid, semi-fluid, discrete item we can move a pack. You can say the movement required for packaging also and storing also will cover under this. अगर हम ओवरऑल देखें तो 20% of the total cost include our material handling cost. Clear? The layout designing and material handling designing are inseparable. ओके जब आप मटेरियल हैंडलिंग का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका जो लेआउट डिज़ाइन होता है वो दोनों आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, कैसे आपका मटेरियल मूव करेगा, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे या किस स्पीड से मूव होगा, उसी पे बेस्ड आपका लेआउट भी डिज़ाइन होता है. एंड इन अ टिपिकल फैसिलिटी मटेरियल हैंडलिंग अकाउंट 25% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ and 55% of all factory space and 87% of your production time. So you understand that how material handling is important. Basically, material handling is also helpful in reducing your lead time also. आपने फ्लो प्रोसेस चार्ट में भी स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ओके, कहाँ कहाँ पर आपका डिले हो रहा है, तो वो आप लोग जो है वहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो मटेरियल हैंडलिंग वहाँ से आपको देख रहा है कि कहाँ वेस्टेज है, तो उसको आप रिड्यूस कैसे करें. क्लियर? तो मटेरियल हैंडलिंग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो आपकी पूरी ओवरऑल कॉस्ट का 20% अकाउंट कर रहा है. क्लियर? नाउ द कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हैंडलिंग प्रोग्राम और a comprehensive material handling program, or you can say factor affecting material handling program or systems. Types of product. आपका मटेरियल हैंडलिंग जो भी प्रोग्राम आप सेट करेंगे या जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं वो आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस में होता है. ठीक है, वेदर यू हैव अ बल्की प्रोडक्ट, you have a weight in your product, what type of shape it is have, or whether it is liquid, etc. Then plant layout also, the sequence of the movement or whatever distance you need to cover, it depends on your plant layout. Then types of production system, whether you are producing on continuous basis, whether you have follow a intermittent like batch and job shop, it totally depend on that. कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वेटिंग प्रॉब्लम इन इंटरमीडिएट वी हैव. ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग आपका अलग तरीके से है. इन कंटिन्यूस जनरली मटेरियल हैंडलिंग जो होती है वो आपकी अलग तरीके से होगी. आपकी इन बिटवीन आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ही उसकी मटेरियल हैंडलिंग हो रही है. ठीक है, ऑटोमेटिक आप यूज़ करते हैं उस केस में. देन आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग, कि आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग किससे की है, फ्लोर कैसा है, सीलिंग की हाइट क्या है, आपके स्टेयर्स कितनी है, डोर की लोकेशन, उनका साइज़ क्या है, आपके पार्टीशंस अगर हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पार्टीशन यू हैव. माना आपकी सीलिंग हाइट्स जो है बहुत कम है तो क्या आप ओवर सीलिंग हेड जो है क्रेन्स यूज़ कर पाएंगे? नो. अब इफ़ यू हैव अ हाई सीलिंग तो आप यूज़ कर सकते हैं. स्टेयर्स अगर हैं तो आप जो है वहाँ पर व्हील या ट्रॉलीज इस तरह से यूज़, आप वहाँ पर जो है ट्रक्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे मेटेरियल हैंडलिंग के लिए. ठीक है, आपको फ्लैट सरफेस चाहिए तभी आपके जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, वो मूव करेंगे. तो आपको ये भी देखना है कि किस तरीके का सरफेस, स्टेयर्स, ये सब है. तो फैक्ट्री बिल्डिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. देन योर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल.
आपकी रूटिंग एंड शेड्यूलिंग क्या है, पैकेजिंग, what type of packaging you have. Finished products are packed in wooden box, card box, etc. So packaging should be convenient enough in size, and so it can easily handled. तो material handling equipment ये भी देख रहे हैं. And then material handling equipment itself, it is made according to the existing material handling equipment. जो आपके एग्जिस्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दूसरा भी अगर आप लेते हैं, ठीक है, इट परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम and necessary changes are made to get a benefit from such changes. Okay, so the equipment characteristics also play important role in this, कि what type of material handling equipment system you are using. Clear? These are the topics of material handling program and systems. Type of product, plant layout, types of production system, factory building, production planning and control, packaging and material handling equipments. Now, the factor affecting selection of equipment. आप कौन सा इक्विपमेंट सेलेक्ट करें मटेरियल हैंडलिंग के लिए. आप जो है क्या कहते हैं बकेट्स यूज़ कर रहे हैं, या क्रेन यूज़ करेंगे, या ओवरहेड क्रेन यूज़ करेंगे, या छोटी छोटी लॉरीज आती है वो आप यूज़ करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के लिए. इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स आर सच: adaptability, the land carrying and movement, the load carrying and movement characteristic of your equipment should fit to the material handling problem. जो भी आपकी मेटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम है उससे फिट होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए. माना आपने जो है एक मशीन रखी है मेटेरियल हैंडलिंग के लिए, बट उसकी कैपेसिटी है आपकी सिर्फ 300 यूनिट या टन, आप केजी कह सकते हैं, ठीक है, 300 केजी है वो आपका लोड उठा सकती है. बट आपका जो एक इक्विपमेंट है, सिंगल यूनिट इज ओनली 500 केजी, तो क्या आपके लिए वो इक्विपमेंट बेटर है? नो. वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको लोड को कैरी ही नहीं कर पाएगा, मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा. तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि वो अडेप्ट कर पाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. देन फ्लैक्सिबिलिटी, जो भी मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप लेते हैं उसमें इनफ फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट दे कैन हैंडल मोर देन वन टाइप ऑफ मटीरियल, डिफरेंट साइज ऑफ मटीरियल वो हैंडल कर सके. ठीक है. लोड कैपेसिटी शुड हैव इनफ लोड कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू डू द जॉब इफेक्टिवली. देन पावर शुड हैव इनफ पावर अवेलेबल टू डू द जॉब. आपने जो है आप पहाड़ों में आए, पहाड़ों में आपने कहा कि हम पेट्रोल से चलने वाली इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, बट आपने देखा कि यहाँ हमेशा प्रॉब्लम आती है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता. तो क्या आपका वो इक्विपमेंट सक्सेसफुल होगा? नो. ठीक है. तो आपको ये देखना है कि किस टाइप की पावर आप लोगों को मिल रही है वहाँ, अकॉर्डिंगली आप लोग जो है अपने इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं. देन स्पीड, the speed of the movement of the handling equipment should be as high as possible within a limit of your production process and a plant safety. Then space requirement, to install, to operate, how much space you need. Then supervision required. The degree of automation in handling equipment decides the amount of your supervision, कि how much supervision it is needed. Then easy maintenance, at reasonable cost should be. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इक्विपमेंट ले लिया, बहुत अच्छा है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इज सो हाई दैट योर ओवरऑल कॉस्ट इज इंक्रीज, दैन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. देन द कॉस्ट, द वेरियस काइंड ऑफ कॉस्ट to be considered in addition to the initial purchase price of the handling equipment, like operating cost, your installation cost, your maintenance cost, your power requirement, your insurance requirement, your space cost, your opportunity cost. Every type of cost you need to consider. Then capabilities of available manpower to operate that particular equipment. आपने बहुत ही हाई टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हायर कर लिया, बट नोबडी नोज हाउ टू रन इट, दैन इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू. देन सेफ्टी ऑफ द पर्सनल, आप वो इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे जो आपके पर्सनल के लिए सेफ हो. ओके, देन इट इज़ गुड फॉर यू.
So these are the factors that we need to consider before selecting any particular equipment. Then we have principles of material handling. These are certain principles that we need to follow. I explain you with the help of very easy language. Okay, the planning principle. Fine. Planning principle says the large scale material handling project usually require a team approach. आप जो भी material handling program बना रहे हैं या material handling ले रहे हैं, that should be a team approach. Okay, we have to consider every move, every storage need, कितना डिले आपका प्रोडक्शन में हो सकता है, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, एवरीथिंग शुड बी वेल प्लान्ड एंड अकॉर्डिंगली आप कोई भी मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट आप सिलेक्ट करते हैं. देन द सिस्टम प्रिंसिपल्स. मेटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी शुड बी फुली इंटीग्रेटेड. ओके, सिस्टम क्या होता है जिसमें आपका इनपुट और आपका आउटपुट और विद प्रोसेसिंग के साथ अटैच रहता है. यहाँ पर भी सिस्टम क्या है, एवरीथिंग शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इन द प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, ताकि आपका ऑपरेशनल सिस्टम इफेक्टिव हो सके. आपका इंस्पेक्शन, स्टोरेज, योर असेंबली, योर शिपिंग, एवरीथिंग शुड बी कंसाइड. ओके, देन सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल. मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आपको वैसा बनाना है जो आपके प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करे, ना कि कॉम्प्लिकेटेड. अननेसेसरी मूवमेंट्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स के, ये सबको एलिमिनेट करना. ठीक है, यू हैव टू हैंडल दीज 4 क्वेश्चंस इन मेटेरियल हैंडलिंग. लाइक कैन दिस जॉब बी एलिमिनेटेड. अगर हो सके तो उस जॉब को एलिमिनेट करो. मेटेरियल हैंडलिंग इस तरीके से आप करिए कि आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी कम से कम हो, और जो चीज़ एलिमिनेट हो सकती है उसे एलिमिनेट करना. इफ़ यू कैन नॉट एलिमिनेट, वी कैन कंबाइन द मूवमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट. आप मूवमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, आपकी रिड्यूस हो जा रही है कॉस्ट. ठीक है, और रीअरेंज कर रहे हैं आप ऑपरेशंस को ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, डिस्टेंस ट्रैवल आपका कम हो सके. आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के टाइम पे मास प्रोडक्शन में हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपका मेटेरियल हैंडलिंग रिड्यूस हो रहा है, पास ही पास में मूवमेंट हो रहा है, तो आपकी कॉस्ट, ट्रेवल टाइम, एवरीथिंग विल मिनिमाइज्ड. देन इफ़ वी कैन नॉट डू एनी ऑफ द अबव, वी कैन सिंप्लीफाई इट. आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसको और सिंप्लीफाई करिए. देन वी हैव अ ग्रेविटी प्रिंसिपल. ओके, अंडर ग्रेविटी प्रिंसिपल, जहाँ पॉसिबल हो यूज़ अ ग्रेविटी. Utilize gravity to move a material which is very practical, which is very old, and which is very convenient. Space utilization principle should be used. For better, we use our building cubes. Less space is required. Okay. Then rack, magazine, overhead craners we can use. आपने देखा होगा बहुत जगह जो आपकी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं इससे क्या होते हैं कि जो जिग जैग फॉर्म में चलते हैं. मीन्स आपके नीचे भी मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, इक्विपमेंट मूव कर रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर जो आपकी फ्लोर की स्पेस तक की स्पेस, आपके फ्लोर और सीलिंग के बीच की जो स्पेस है पूरी यूज़ हो रही है. ठीक है, वर्टिकली भी. तो वो क्या है, स्पेस को यूटिलाइज आप कर रहे हैं. इस तरीके से आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को चूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग रोलर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ये सब यूज़ भी होती है. ठीक है. देन यूनिट लोड प्रिंसिपल. यूनिट लोड शुड बी अप्रोप्रिएटली साइज्ड, कॉन्फिगर एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन. आप कार्डबोर्ड पैलेट यूज़ कर रहे हैं यूनिट लोड के लिए, जो हम यूज़ करते हैं पैलेट्स. ठीक है, प्लास्टिक पैलेट यूज़ कर रहे हैं, वुडन पैलेट कर रहे हैं, स्टील स्केच कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लोड ओनली. ठीक है. देन ऑटोमेशन प्रिंसिपल्स आर देयर. लाइक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ऑपरेशन शुड बी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड वेयर फिजिबल टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी. आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिबिलिटी को जो है डिक्रीज़ करने के लिए, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना आए ज़्यादा, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज़ ना हो. ठीक है, मिस हैंडलिंग ना हो. इन सब के लिए ऑटोमेशन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं. देन इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रिंसिपल मीन्स वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु विल यूज़ that particular
equipment should be well planned. If you answer these questions, you can solve various problems. And another thing is standardization principle. Okay, standardization principle, standardize the handling method as well as the type and size of handling equipment. Too many size branding equipments result a high operating cost. So use a simple method. You use machines which can handle multiple types of weight or units or a size. That will be helpful to reduce the cost. Then a dead weight principle. Try to reduce the ratio of equipment weight to product weight. Okay, do not buy equipment that is bigger than necessary. हमने बहुत बड़ी इक्विपमेंट ले ली, ठीक है, हमने ट्रक ले लिया, बट हमें कैरी क्या करना है, सिर्फ एक कार्डबोर्ड छोटा, तो दैट इज़ नॉट गुड. जो आपकी नेसेसिटी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बाय द इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हाई वेट मीन्स it need a high power, he need a high resources, they need a high space also, which just a wastage of your resources. Then maintenance principles. Plan for a preventive maintenance. Schedule repair should be there to handle the equipment effectively. क्योंकि ऑल ऑफ द सडन अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट फेल होता है या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रेक डाउन होता है, दैट रिजल्ट ओ हाई कॉस्ट. So it should be well maintained so that that cost is also reduced and the lifestyle of that particular machine or equipment will increase. Then capacity principle. Use handling equipment to help to achieve a desired production capacity. That is, material handling equipment can helpful to maximize production equipment utilization. Clear? Now, I hope you understand the material handling equipment principles also. These principles guide us कि how to make our material handling very effective. Main objective is to handle every equipment, handling everything by reducing the cost, by reducing the time, etc. Clear? Hope you understand this. In another class, we will discuss about material handling equipment, etc. Thank you for the day, students.